Hello, good afternoon, student. Today's date 13 October 2020. Standard 7th, subject Science. My name is Hiral Rao. Okay, chapter number 12, Reproduction in Plants. In previous lecture, we have studied the modes of reproductions. We have studied sexual reproductions and sexual reproductions. We have already studied the vegetative parts of the plants. Okay, then we have studied vegetative propagations. It is a type of sexual productions in which new plants are produced from roots, stems, leaves, and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as the vegetative propagations. Okay, now we have studied figure 12.1 stem cutting rows. You must have seen flowers, birds developing into flowers. Apart from flower birds, there are birds in the axil. ना birds जो होते हैं वो axil से grow up होते हैं. Okay, this is the part of the vegetative propagations, and we already studied the potato's eyes. है ना, that is roots, potato birds, and ginger. Okay, and then bryophyllum. This is the leaf of bryophyllum with buds in the margin. Okay, इसमें जो है वो margin है. bryophyllum जो है, जो margin है, वहाँ से जो buds है वो grow up हो रहे हैं. Okay, then plants such as cacti produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plants. Okay, then we have studied the budding. In this chapter, in this video, we have studied the budding. Okay, what is budding? बडिंग के बारे में भी हमने देखा था, है ना. बडिंग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं. व्हाट इज बडिंग? तो दिस इज द यीस्ट. रिप्रोडक्शन इज यीस्ट बाय बडिंग. बडिंग से इससे रिप्रोडक्शंस होता है. ओके, यहाँ डेफिनेशन दी है. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन coming out from the yeast cell is called a bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures, and produces more yeast cells. Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. Okay, बहुत सारे जो yeast cells हैं वो produce हो जाते हैं. Okay, then we have studied the fragmentations. What is fragmentations? You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. Okay, हमें water bodies में ऐसे stagnants देखने को मिलते हैं. These are the algae. ये जो है वो algae है. When water and nutrition are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. जब उनको water पानी अवेलेबल होता है ना, एंड एयर अवेलेबल होती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड alga breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period. This is a fragmentation of Spirogyra. Okay, here the spore formations. What is spore formations? In chapter 1, you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity. हमें activity repeat करनी है. Observe the spores in the cotton. हमें वो देखना है. Like mash on the bread. When spores are released, they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distances. The spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time under favorable conditions. A spore germinates and develops into a new individual.
Plant such as moss and ferns also reproductive by means of spores. Okay. Then we have studied the sexual reproductions. You have learnt earlier the structures of a flowers. हमने flowers का structure देखा था जिसमें हमने flowers is a reproductive parts of plant. The stamens are the male reproductive part and the pistil is the female reproductive part. Okay. तो हमने ये जो है वो स्टडी किया था, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है व्हाट इज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. सो द आंसर इज द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुलर फ्लावर्स. Okay, and the bisexual flowers, the flowers which contain both stamens and pistil are called bisexual flowers. Corn, papaya and cucumber produce unisexular flowers, whereas mustard, rose and petunia have a bisexual flowers. Okay, this is the diagram of stamen, pistils, है ना, filament अलग अलग दिए हैं. Okay, now the wonderful part, pollinations, है ना. Both the male and the female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants. Could you identify the anther and the filament of a stamen? हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके. एंथर कंटेंट पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो कंटेन करता है जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं. अ पिस्टिल consist of stigma, style and ovary. The ovary contains one or more ovules. Ovules में one or more ovules होते हैं. The female gamete or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote, जिससे zygote बनता है. Okay. This is the definitions of pollinations. What is pollinations? Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. जनरली क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें टफ कोटिंग होता है. सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन कैरीड बाय विंड. इसके लिए वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं और कैरीड बाय विंड, हवा से वो उड़ जाते हैं. वाटर इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज. ओके, वो जो है वो उड़ जाते हैं. सम ऑफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा और अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. और वो सेम काइंड के फ्लावर्स में एक ही ट्रीज पे जो होता है तो वो हुआ सेल्फ पोलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा और अ फ्लावर इज कॉल्ड अ पोलिनेशन. दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ पोलिनेशंस. ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज पोलिनेशंस एंड गिव पार्ट ऑफ द पोलिनेशंस. तो दो पार्ट्स हैं, सेल्फ पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशंस. दोनों की डेफिनेशन दी है ना. इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा और द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ पोलिनेशंस. ओके, पोलन एंड स्टिग्मा जो सेम फ्लावर्स पे होता है वो सेल्फ पोलिनेशंस हुआ. व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशंस. ओके, यहाँ पे जो है वो पिक्चर्स में दिया है. पोलन ग्रेन्स जो है वो ऊपर है, नीचे ओवम है. दिस इज पोलन ट्यूब और दिस इज जाइगोट फॉर्मेशंस. ओके, ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही होता है ना. तो यहाँ पे अभी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. ओके, सी द डायग्राम केयरफुली. ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो रहा है. देन बीच में बता रही है वो पोलन ट्यूब है. ओके, जिससे जो है वो जाइगोट फॉर्मेशंस हो रहा है धीरे धीरे, है ना. और मिडल में है ओवम है. ये पूरी फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस है. ओके, द सेल विच results after fusions of the gametes is called a zygote. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization.
या फिगर 12.11 में बताया है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। ओके, दिस इज द डायग्राम। देन टॉपिक 12.3 fruits and seed formations. After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. The fruit is the repinned ovary. The seeds develop from the ovules. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed pod. Some fruits are fleshy and juicy, such as mango, apple and orange. है ना, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे जूसी होते हैं, है ना, लाइक मैंगो, एप्पल और ऑरेंज की बात की है। सम फ्रूट्स आर हार्ड, लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ओके, कोई कोई फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। यहाँ 10.4 दिखा है सीड डिस्पर्सल। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? In nature, same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruit sticking to your clothes. कभी कभी हम गार्डन में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो बहुत सारे सीड्स है वो हमारे ऊपर जो है वो लग जाते हैं, है ना। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वेर क्लीनिंग टू योर क्लोथ? ओके, आपने कभी देखा है कि आपने डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वेर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ? आपके कपड़े के ऊपर कैसे चिपके और आप कैसे उसको निकालते हो? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? Okay, सारे सीड्स एक ही जगह पे हो जाए तो क्या होगा? There would be severe competitions for sunlight, water, minerals and space. As a result, the seed would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. It prevents the competitions between the plant and its own seedlings for sunlight, water and minerals. It also enables the plants to encave new habits for wider distributions. Seeds and fruits of plants are carried away by wind, वाटर एंड एनिमल्स। ओके, इससे सबसे जो है सीड्स है, फ्रूट्स है ना, वो सब कैरीड अवे क्या लेके आते हैं? विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंग्ड सीड्स सच एज दोस ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड मैपल। ओके, उसमें वो हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम दिया है। 12.13 में सीड्स दिए हैं। ए जो है वो ड्रमस्टिक का जो सीड्स है एंड बी जो है वो मैपल का सीड्स है। एंड बी लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस ऑफ हैरी सीड्स ऑफ आक मीन्स के मदार एंड हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। फिगर 12.14 ए बी में बताया है। 12.14 ए में हमें द हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर्स के बारे में बताया है एंड बी में हमें हैरिंग सीड्स ऑफ मदार के बारे में बताया है। ओके, गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, कोई कोई सीड्स तो डिस्पर्स हो जाते हैं पानी से। These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat, as in coconut. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks
which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. एग्जाम्पल आर जैंथियम, जैंथियम में ऐसा होता है, एंड यूरेना, वो दोनों सीड्स में ऐसा होता है. सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स ब्रस्ट विथ सडन जॉक्स, है ना, कभी कभी जॉक्स आ जाता है. द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पैरेंट प्लांट. दिस हैपेंस इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम. ओके, उसमें ऐसा होता है. ओके, 12.14 में बताया है. द हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हैरी सीड ऑफ मदार. 12.15 में हमें जैंथियम के बारे में बताया है. जैंथियम का सीड्स है वो दिया है. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक ये चैप्टर है. ओके, अभी उसके कीवर्ड्स हम देख लेते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशंस, गैमेट्स, हाइफा, ओवेल्यू, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, पोलिनेशन, सीड्स डिस्पर्सल, sexual reproduction, spore, the sprongium, vegetative propagation and zygote. Okay, ये पूरे चैप्टर की समरी है. What do you have learned in this chapter? So all organisms multiply or reproduce their own kind. In plants there are two modes of reproduction, asexual and sexual. There are several methods of asexual reproduction such as fragmentations, budding, spore formation and vegetative propagations. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. In vegetative propagation, new plants are produced from different vegetative parts such as leaves, stem and roots. ओके, देन फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. अ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुलर विथ आइदर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स. अ बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज़ बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. द मेल gametes are found inside the pollen grains and female gametes are found in the ovule. Pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower. Okay, ये definition हो गई. Then pollination is of two types, self pollination and cross pollinations. In self pollinations, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower. In cross pollinations, pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind. Pollination takes place in plants with the help of wind, water and insects. The fusions of male and female gametes is called fertilization. Fertilization eggs is called zygote. Zygote develops into an embryo. Fruit is the mature ovary wherever ovule develops into a seed which contains the developing embryo. Seed dispersal is aided by wind, water and animals. Seed dispersal helps the plants to 1. Prevent overcount. Second है अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. एंड थर्ड है इन्वेड न्यू हैबिट्स. ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर इतना है. ओके, अभी आज के लिए मैं आपको जो है वो क्वेश्चन जो मैंने पहले दो बताए हैं, बट क्वेश्चन की जगह आप है ना ये चैप्टर के डायग्राम ड्रॉ करना. ओके, योर फर्स्ट डायग्राम इज़ द लीव्स ऑफ बायोफ्लालम. आपको अच्छे, दिस इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क. आपको साइंस की बुक में ही प्रोजेक्ट वर्क करना है. ओके, फर्स्ट जो है आप ये जो है लीव्स वो ड्रॉ कर देना. देन फिगर 12.5 रिप्रोडक्शन इन ईस्ट.
बाय बर्डिंग। देन आपको ये जो है स्पायरोगायरा की जो फिगर है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पायरोगायरा, ये भी ड्रॉ करनी है। ओके। देन 12.7, ये चैप्टर में जितना डायग्राम है, ये एप्पल का जो है जितना भी डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज़ आवर बायोलॉजी लेक्चर, बायोलॉजी का ये पोर्शंस है। तो इतने डायग्राम आप अपने प्रोजेक्ट वर्क समझिए साइंस का। ओके, इतने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके आप पिक खींच के मुझे भेजना। ओके, थैंक यू।